Hello students, in today's lecture we'll study the furthest step of agricultural practices. But before that we'll take a quick revision of our previous topics. We are doing our first chapter, that is crop production and management, in which we had studied till this lecture that how the crops are produced in agricultural field. For this we apply 7 practices. For this we'll go through 7 various practices, out of which the first one was preparation of soil, for which we use plowing and leveling. After the preparation of soil, we select and then sow the seeds. उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं सीड्स को, और उसके बाद उन्हें सो करते हैं, उन्हें बोते हैं, ताकि हम उनसे क्रॉप प्रोड्यूस कर सकें. After selection and sowing of seeds, what we do is we irrigate them. हम irrigation करते हैं बच्चों. इसी के बीच एक स्टेप आता है, that is replenishment of nutrients. उसमें हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा था. अब हम बच्चे नेक्स्ट स्टेप पढ़ने वाले हैं, जो इरिगेशन के बाद, जो 4th स्टेप के बाद है, that is क्रॉप प्रोटेक्शन. 4 स्टेप में बच्चे हमने क्रॉप में सीड्स चूज कर लिए. नाउ वी सो देम. आफ्टर दैट द क्रॉप विल स्टार्ट्स टू ग्रो. Then that crop will be harmed by certain various factors. How we can protect that crop from those factors, that we'll study in this topic. There are 2 major factors which may harm a crop. One, weeds, another one, pests and diseases. So we'll study them one by one. So first of all, what are the 2 factors which may harm the crops? First is weeds, another one is pests. That question will also be molded in your exam, that what are the 2 factors from which we require protection for the crops. तो कौन से 2 फैक्टर्स हैं जिनसे हमें प्रोटेक्शन चाहिए क्रॉप को? एक वीड से प्रोटेक्ट करना है क्रॉप्स को, और दूसरा पेस्ट एंड डिजीजेस. फर्स्ट विल स्टडी अबाउट द वीड्स, दैट इज लाई अंडर टॉपिक नेम्ड एज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. कि हम वीड से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अपनी क्रॉप को. फॉर दैट फर्स्ट विल डिस्कस व्हाट इज अ वीड. वीड है क्या? वीड इज अ अनवांटेड प्लांट that grow along with our crop plant. Weed एक ऐसा unwanted plant है, undesirable plant है, जो हमारी crop plant के साथ grow हो जाता है. So the definition of weed is the unwanted plant which grows along with the main crop is called or are called weed or weeds. ऐसे unwanted plants जो हमारी crop plant के साथ grow होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? Weeds बोलते हैं. Examples of weeds, there are multiple examples below, but few of them are written here. First one is amaranthus. Amaranthus को हिंदी में चौलाई बोलते हैं. Next, cypress, it's a grass-like structure. Next, commonest grass, the most common grass which you must have observed on the roadsides, that is commonest grass, which grows very quickly in the rainy season. So these are the weeds which grow along with the crop plants. These weeds somehow harm the crop, and how they harm the crop, that we'll study in our next topic, that is disadvantages of weeds. Disadvantages means the loss. What loss can be done to our main crop? क्या loss पहुंचा सकता है एक weed हमारी main crop? First thing बच्चे, weed हम चाहते नहीं हैं. अब weed वो उसी crop में लाया, उसी रीजन में लाया जाए क्रॉप, तो बच्चे से क्या होगा? जो सनलाइट, जो वाटर, जो मिनरल्स क्रॉप को मिलने चाहिए थे, वो क्रॉप को नहीं मिलेंगे. क्यों? वीड उसके साथ ग्रो हो रहा है बच्चे, तो कुछ आधे न्यूट्रिएंट्स क्रॉप लेंगे और आधे न्यूट्रिएंट्स वीड. तो बच्चे जो पूरे न्यूट्रिएंट्स पहले क्रॉप को मिल सकते थे, अब वो आधे मिल रहे हैं, तो इससे क्रॉप की प्रोडक्शन पर इफेक्ट आएगा. सेकेंड थिंग, वीड्स हार्बर पेस्ट्स. वीड्स हार्बर मीन्स दे give shelter to the pest. Weeds बच्चे pests को shelter देते हैं. Pest means insects, various organisms which harm the crop. वो weed खाते हैं और weed पर जिंदा रहते हैं, तो वो crop के साथ, तो वो weed जो है बच्चे वो pest को जगा देगा, तो pest धीरे धीरे crop को खाने लगेगा, तो ultimately जो crop है उसको नुकसान होगा बच्चे. So weeds will harbor the pests, and those pests directly or indirectly harm the crop field. Third, some weeds produce toxic substances, produce poisonous substances. कुछ weeds जो है बच्चों वो जहरीले सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं.
और जहरीले सब्सटेंस which are toxic substances will harm our crop plant, और उससे हमारी crop plant को नुकसान होगा. So these are the 3 disadvantages of weeds. First one, competition. Weeds compete with the main crop plants. For किस चीज के लिए compete करेगा? Nutrients, water and sunlight. And you can write the 4th step as well for the space as well. जो बच्चे वीड है वो प्लांट के साथ compete करेगा, लड़ेगा उससे. किस चीज के लिए? सनलाइट लेने के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स के लिए और स्पेस शेल्टर के लिए. इससे हमारे क्रॉप प्लांट को नुकसान हो जाएगा. जो पूरी चीज पहले उसे मिलने वाली थी अब वो आधी वीड को मिल रही है. सेकंड, वीड्स हार्बर पेस्ट्स. जो वीड्स है बच्चे वो पेस्ट को हार्बर करते हैं, पेस्ट की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, इससे भी हमारी क्रॉप को नुकसान होता है. थर्ड इज वीड्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, production of toxic substances, and those toxic substances directly or indirectly harm our crop. Next we'll study how we can remove the weeds. अब जरूरी है बच्चे कि हम इस वीड को रिमूव करें क्योंकि वो क्रॉप प्लांट को नुकसान पहुंचा रहा है. And the process of removal of the weeds from the main crop is known as weeding. इन वीड्स को रिमूव करना क्रॉप फील्ड से, हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड से, दैट इज नोन एज वीडिंग. द रिमूवल ऑफ वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम द मेन क्रॉप फील्ड इज नोन एज वीडिंग. तो बच्चे रिमूवल ऑफ वीड्स को क्या बोलते हैं? वीडिंग बोलते हैं. नेक्स्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर क्वेश्चन पेपर, फॉर योर फाइनल क्वेश्चन पेपर, दैट इज मेथड्स ऑफ वीडिंग. What methods we can use to remove the weeds? There are several methods out of which we will study the 3 methods. The first one is mechanical method. This mechanical method is also known as manual method. Manual means human beings do it on their own, either by their hands, bare hands. How by bare hands? By uprooting the weeds. Uprooting means जड़ से उखाड़ना. ह्यूमन बीइंग चाहे उसे पता है, एग्रीकल्चरिस्ट को पता होता है, बच्चे फार्मर को पता होता है कि वीड कौन सा और फसल कौन सी, क्रॉप कौन सी. तो क्या करता है बच्चे? वीड को अप्रूव कर देगा और क्रॉप को वहीं रहने देगा. दैट इज मैनुअल मेथड. सेकंड इज द वीडिंग, रिमूवल ऑफ वीड्स इज डन बाय द हेल्प ऑफ अ ट्रॉवल. नॉट टॉवल, इट्स ट्रॉवल. खुरपी बोलते हैं इसे. जो ट्रॉवल है बच्चे कुछ इस तरह का डिवाइस होता है. आपने देखा भी होगा लॉन में, अगर आपकी कोई गार्डनर आता है तो वो ट्रॉवल की हेल्प से यू अपसाइड डाउन करता है सॉइल, और साथ साथ वो क्या कर रहा है? वीड्स को अपरूट कर रहा है. दैट इज व्हाट द ट्रॉवल इज ऑल. बट नाउअडेज प्लोज एंड कल्टीवेटर्स आर आल्सो देयर व्हिच हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वीड्स. दोस प्लोज एंड कल्टीवेटर्स आर ड्रिवन बाय द ट्रैक्टर्स. सो दैट्स हाउ मैनुअली और मैकेनिकली वी रिमूव द वीड्स. नेक्स्ट, chemical method. Chemicals which are used to kill the weeds are known as weedicides. वो केमिकल बच्चे जो वीड्स को किल कर देता है उसे हम वीडिसाइड बोलते हैं. टू प्रिपेयर दैट केमिकल वी मस्ट हैव टू कीप वन कंडीशन इन माइंड. अब बच्चे हर केमिकल को इस्तेमाल कर नहीं सकते, सिर्फ वही केमिकल चूज करना है which only kill the weeds but does not harm our crop. हमें वो केमिकल चुनना है जो वीड को तो खत्म कर दे, वीड को तो मार दे, बट हमारी क्रॉप को कोई नुकसान ना पहुंचाए. तो अगर मुझे पूछे बच्चे क्या हर केमिकल यूज करते हैं? नो, दैट इज नॉट द ट्रू आंसर. वी कैन नॉट यूज एनी केमिकल एज अ weedicide because for the chemical being a weedicide one thing is prerequisite. एक जरूरी चीज चाहिए, वो क्या है? एंड दैट कंडीशन इज that weedicide must only kill the weeds and does not pose any harm to our main crop. वो सिर्फ weeds को ही किल करे, हमारी मेन क्रॉप को कोई हार्म ना पहुंचे. The examples of weedicides are 2,4-D, and this D, only D stands for dichlorophenoxyacetic acid. ये एक ही नाम है, that is dichlorophenoxyacetic acid. That's the full form of D in 2,4-D. Next, butachlor, it's also a name of a weedicide. Metachlor, cyazine,
These are also certain examples of weedicides. Do remember one or two examples of weedicides. So that's the chemical method of removal of weeds, that is weeding. Third method of weeding is biological control. What do you mean by bio means life, budget, living. For that method we use certain living organisms which kill only weeds and does not pose any threat to main crop. For biological method, we use certain living organisms which only feed on the weeds, weed plants, but not pose any harm to the crop. इसमें बच्चे हम biological living organisms चुनते हैं जो सिर्फ weed को मारे, weed को खाए, crop plant को कोई नुकसान ना पहुंचाए बच्चे, and that is known as biological method of weeding. In this, insects or some other organisms which specifically feed on weeds, specifically means विशेष तौर पर, specially feed करते हैं weeds पर और crop को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, those are known as bio-weedicides. उन्हें क्या बोलते हैं? Bio-weedicides बोलते हैं. Bio means life, weedicide means ऐसी चीज जो weed को kill करे. The example of biological method or biological weeding is very important, and that is weeding of opuntia. Opuntia is also referred as prickly pear cactus. इसका जो दूसरा नाम है, उससे कॉमन नेम जो है वो है prickly pear cactus. That's a weed which is checked by, which is controlled by, which is eaten up by an insect named as cochlear insect. Cochlear insect इस weed को खा जाता है और main crop को कोई harm नहीं करता. Generally that grows along with the cotton plant basically. Next, protection from pests and diseases. This is the second factor which may harm the crop. Now first we'll discuss what is pest. What are pests? Pests क्या है? Any insect or microorganism which may harm a crop is known as a pest. Or you can say broadly, any living organism which may harm a crop is known as pest. For example, insects. Certain insects which grow on the crop plants, they feed on the leaves of the crop plant, and leaf would not be there, then photosynthesis would not be there, and crop will be harmed. Some insects eat the roots, some insects eat the stem. So that's how insects will harm the crops. Certain microorganisms like fungus will grow on the crops. They will cause certain diseases like rot and smut disease to wheat. Wheat को होती है बच्चे, fungus disease है. For that disease we use certain chemical known as fungicides to kill fungus. Certain mice, insect mice will eat the crop plants in the field. Those mice are controlled by certain chemicals known as rodenticides. Mice are labeled into a class known as rodents. Mice को एक class में करते हैं, उस class को हम rodent बोलते हैं, rodent. So those rodents are killed by rodenticides. For insects we have certain specific chemicals known as insecticides. For fungus we have fungicides. All these are collectively studied in one term that is known as pesticide. And you must have seen the shops all around you, beta. Zimidara pesticides, Aman pesticides, Noor pesticides. So these are the pesticide shops name. Why they are referred as pesticides? Because they have those chemicals which make in all these things and make protect our crop crops. So that's how we can protect our crop crops. Next, one more point we must have to mention, or we must have to learn here, that for stray animals, stray means ये जो गाय भैंस आमतौर पर यूं घूमते रहते हैं बच्चे, इनसे बचाने के लिए हम जरूर क्या करते हैं, क्रॉप फील्ड की फेंसिंग करते हैं. बाहर आपने देखा होगा बच्चे, अपनी किसी रोड पर जाते तो बाहर एक फेंस लगी होती है, एक बाड़ लगा देते हैं, उस फेंस से वो एनिमल अंदर नहीं जा पाता. या आपने एक स्केयरक्रो देखा होगा. स्केयरक्रो इस तरह का कैसे पुतला सा बनाते हैं, डरावना सा, एक हॉरिबल, और उसे खड़ा कर देते हैं ताकि जो बर्ड्स हैं वो उस क्रॉप को, स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट्स को हार्म ना कर सके. So these are the methods by which we can protect our crop. The next topic of agricultural practices is the sixth step, that is harvesting. As we have discussed that how we grow the crop, we protect it, we irrigate it, we replenish the soil by nutrients. Now the crop is to be grown
the crop maturation, we have to cut the crop and we have to gather the grains obtained from the crop. हर एक सीरियल क्रॉप को, राइस, व्हीट को जनरली मैच्योर होने में 3 से 4 महीने लगते हैं. उस मैच्योरेशन के बाद, आफ्टर दैट मैच्योरेशन, वी नीड टू कट इट. हम उसे कट करना है. कट करने के बाद हम उसमें जो ग्रेन्स हो गए, उसमें जो दाने हो गए, उनको गैदर करना है. And that cutting and gathering of the grains from the crop is known as harvesting. इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? Harvesting. So the process of cutting and gathering of the crop after its maturation is called harvesting. क्रॉप के पूरी तरह से मैच्योर होने के बाद, पूरी तरह से ग्रो होने के बाद उसे कट करना और उससे ग्रेन्स को ऑब्टेन करके गैदर करना, दैट इज नोन एज हार्वेस्टिंग. इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? हार्वेस्टिंग. Now the next topic is, there is a table in your book, that is harvest festivals. You know बच्चों, harvesting time is the most joyous or happy time for a farmer. Why? Because if that farmer cut the crop, gather the grains and sell it to the market, then only that person will able to earn something to manage his family or his expenses. एक फार्मर के लिए बच्चे हार्वेस्टिंग टाइम सबसे बड़ा फेस्टिवल है. क्यों? क्योंकि बच्चे एक फार्मर के लिए फसल ही सब कुछ है. वो उस फसल को काटेगा, उससे दाने इकट्ठे करेगा, जो भी सीरियल क्रॉप है, जो भी क्रॉप है, उसे बेचेगा, तभी उसे कुछ अर्न होगा, उसे कुछ कमाई होगी और उससे वो जी पाएगा, जीवन यापन कर पाएगा, अपनी लाइवलीहुड को मेंटेन कर पाएगा. सो देयर आर वेरियस फेस्टिवल्स which brings the joys in the lives of farmers, like Pongal, that's basically related to the South Indians, Baisakhi for the North Indians, Diwali for every Indian or every person. Diwali is a festival. It is also a harvesting festival for a crop, usually like for the rice. It is harvested nearby the Diwali season. So these are certain festivals which are related with the harvesting of the crops. Now the methods of harvesting, that is need to be discussed. बच्चों, हमने पढ़ा कि हम क्रॉप को मैच्योर होने के बाद उसे कट करते हैं और उसके ग्रेन्स को गैदर करते हैं. Now we'll study what are the methods we usually use to harvest the crop. किन मेथड से हम अपनी क्रॉप को कट करेंगे और उसमें से उस क्रॉप्स में से अपने ग्रेन्स को गैदर कर पाएंगे. There are two methods in general. First one is manual method. Manual means in this the laborers will go to the crop field, or the farmer itself will go to the crop field and cut the crop plants near to its roots by the help of a sharp instrument known as a sickle. Sickle को दराजी बोलते हैं बच्चे. एक पर्सन है, एक लेबरर या एग्रीकल्चरलिस्ट, खुद जाएगा बच्चे रूट्स के आर पास से एक फसल को काटेगा, कलेक्ट करेगा उसे और कलेक्ट करके एक जगह पर इकट्ठा कर देगा. अभी तक ग्रेन्स ऑब्टेन नहीं हुए हैं. टिल दैट प्रोसेस वी डिडंट ऑब्टेन द ग्रेन्स येट. अभी तक हमने सिर्फ क्या किया, वी हैड ओनली कट द बाय द हेल्प ऑफ सिकल. दैट इज अ मैनुअल मेथड. द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ. चाफ मींस बच्चे जो पूरी क्रॉप करेंगे तो इतना बड़ा है वो बच्चे, जो टिप है, जो हैंड है, ये ग्रेन्स का पोर्शन है. यहाँ पे ग्रेन्स होंगे, बाकी जो पोर्शन है दैट इज द वेस्ट मटेरियल, दैट इज एग्रीकल्चरल वेस्ट which can be used to make fodder of the animals, जो बच्चे चारा बनाने के काम आ सकता है, और you can make manure or compost from, या फिर उससे कंपोस्ट बना सकते हैं. तो बच्चों क्या है, जो ये सेपरेशन है ग्रेन्स का from the chaff is known as threshing. Separation of the grains from its chaff is known as threshing. इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? threshing. अब बच्चे मैनुअल मेथड में थ्रेशिंग कैसे होती है? एक लेबरर ने क्या किया बच्चे, क्रॉप कट कर दिया तो हमारे पास चाफ और ग्रेन है. तो क्या करते हैं बच्चे, उस चाफ को जोर से विल हिट हार्ड दैट चाफ ऑन अ हार्ड सरफेस. एक लोहे का एक बड़ा सा ड्रम लेते हैं बेटा जनरली यूजुअली, और उस पर जोर जोर से उसे मारते हैं. तो मारने से क्या होता है बच्चे, ग्रेन्स दूसरी तरफ इकट्ठे होते रहते हैं और चाफ हाथ में रहते हैं. जब पूरी तरह से ग्रेन्स रिमूव हो जाते हैं तो चाफ को अलग कर लिया जाता है, उससे फॉडर बनाया जाता है. यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में फॉडर बनाया जाता है, जिससे हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, मैन्योर. So, in manual method, both the things, the cutting as well as threshing is done manually. Cutting is done by sickle and threshing is done by hitting the chaff
on a hard surface. Next, second is combined structure. Combines are usually referred as harvesters. इनको कॉमन लैंग्वेज में हार्वेस्टर्स बोलते हैं. कंबाइंस सर्व ड्यूअल पर्पस. ये दो पर्पस, दो काम एक साथ करता है. फर्स्ट, इट विल कट द क्रॉप ऑन इटसेल्फ. इट्स अ मशीन, इट्स अ मशीन, इट्स अ लार्ज साइज मशीन which is operated by 2 or 3 persons at one time, as well as it is driven by the various fuels. These combines serves the dual purpose that it will cut the crop as well as it will gather the grains. ये बच्चे कटिंग भी खुद करता है क्रॉप की और थ्रेशिंग भी खुद करता है. तो बच्चे it serves the both of the purpose. It is a harvester as well as thresher. For that we have a mechanical threshers. अगर हम मैनुअल थ्रेशिंग नहीं करना चाहते तो हाथ से कट करवा लो. उसके बाद मैकेनिकल थ्रेशर्स भी आते हैं बच्चे. इसमें कंबाइन एक ही के लिए काफी है. Harvester is only single thing which solves the dual purpose of cutting as well as of threshing. वो कट भी करता जाएगा, चाफ जो बचेगी उसको अलग फेंक देगा फील्ड में, और जो ग्रेन होगा उसको अपने उसके अंदर स्टोरेज बॉक्स होता है उसमें कलेक्ट कर देगा. So that's what the methods of threshing. Now, we had studied how we harvest the crop, how we cut the crops, and how we separate the grains from the chaff. जो बच्चे बड़ा प्लांट का पार्ट है जिससे हमें उसे सेपरेट करना है, जो ग्रेन्स के टॉप पर उसे सेपरेट कर दिया. अभी भी बच्चे एक प्रॉब्लम है छोटी सी. Still we have certain hiccup in that. What is that? That those grains still contain certain waste material. अभी भी उन ग्रेन में बहुत फाइन वेस्ट मटेरियल होता है and that waste material is known as husk. और उस वेस्ट मटेरियल को क्या बोलते हैं बच्चों? husk. अब बच्चे क्रॉप जो है हम सारी खाते तो है नहीं. हमारी जो गवर्नमेंट है, हम जो खुद है कुछ पार्ट्स क्रॉप का सेव करते हैं फॉर लेटर ऑन पर्पस, फॉर एज अ सीड पर्पस बच्चे. तो फॉर दैट वी मस्ट एंश्योर दैट वी हैव टू सेपरेट दैट हस्क फ्रॉम द ग्रेन्स. हमें ये एंश्योर करना ही पड़ेगा कि हम उस हस्क को अपने ग्रेन से क्या कर दें, सेपरेट कर दें. And that process is done by winnowing. So, बच्चे, after harvesting, after cutting of crop, grains need to be winnowed. What is winnowing? Separation of grains from the husk is known as winnowing. Separation of grain from the chaff, from the plant part, is known as threshing, and separation of the grains which are already obtained after threshing from the husk, from the fine impurities, is known as winnowing. Winnowing is done by certain machines as well as manually. बच्चे मैनुअली भी करते हैं, मशीन्स उन्हें विनोवर्स बोलते हैं, उससे नहीं कर सकते. मैनुअली में क्या करते हैं बच्चे? एक विनोइंग बकेट लेते हैं, जैसे डायग्राम में समझाने की कोशिश की गई है. विनोइंग बकेट लेते हैं बच्चे. एक बकेट होती है कुछ इस तरह, इसकी बाउंड्री इतनी बड़ी होती है. इसमें हम बच्चे मिक्सचर ऑफ ग्रेन और हस्क डालते हैं. उसके बाद एक पर्सन इसे ऊपर उठाता है और टिल्ट करके हिलाता है. By that, the grains along with the husks will come down. इससे क्या होता है? जो grains और husks का mixture वो नीचे आने लगता है. Grains are heavy. जो दाने होते हैं, grains होते हैं, वो heavy होते हैं. And heavy things fall vertically. Heavy things हवा की वजह से आगे नहीं जा पाएंगे बेटा. Heavy है, तो वो वही नीचे गिर जाएंगे due to gravity. But बच्चे husk particles are lighter. Husk जो होते हैं, light होती है, fine होती है, बहुत पतली. They can easily move away with the wind. वो हल्की फुल्की हवा में डूब जा सकती है. तो बच्चे, during winnowing, when winnowing basket is moving, the heavier particles will fall vertically, just right there, and the lighter particles will move ahead. The same thing is represented in this diagram. That's the mixture of grain and husk. It is to be fall down from that height by a person through winnowing basket. एक person winnowing basket में इस मिक्सचर को डालकर नीचे की ओर फेंका. हवा आ रही है, डायरेक्शन ऑफ विंड अगर देखा जाए तो पीछे से हो, उस तरफ से आ रही है. हम ऐसा जूम कर रहे हैं इस डायग्राम में. तो बच्चे जो लाइटर पार्टिकल्स हैं which are shown by these straight lines, those lighter particles are moved ahead. ये lighter particle आगे आ गया. Those particles are of husk, and the heavier particles are fall vertically right there, और heavier particles वहीं गिर रहे हैं, and those heavier particles are of grains. So that's how we done the winnowing.
That's how we separate the grain particles from